Hello guys, so in our previous discussion on the Indian Penal Code, we had finished the offences against body. Today in this lecture, we are going to continue our discussion on the Indian Penal Code, and today we'll try to finish the offences against the property. Okay, so basic things first. One important thing that can be asked with respect to this chapter is which chapter of the Indian Penal Code basically deals with the offences against property. So that you can see and easily you can understand that this has been okay. Just a second. Okay, guys. So in the previous discussion, we had covered offences against body, and in now today's lecture, we are going to continue our discussion on offences against property. So the first and foremost thing is that which chapter of the Indian Penal Code deals with the offences against property. So it is chapter 17 that you have to remember for the purposes of your exam. Chapter 17 of the Indian Penal Code, from sections 378 to section 462. चैप्टर 17 हो गया. चैप्टर 17 डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से. कहां से कहां तक सेक्शंस हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में? सेक्शन 378 टू सेक्शन 462. मेजरली द इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस, broadly we can obviously figure out that it is theft, extortion, robbery, dacoity, criminal misappropriation of property, criminal breach of trust, and then you have trespass, criminal trespass, house trespass, lurking house trespass, house breaking, lurking house trespass by night, and house breaking by night. So these are some of the important sections which are covered under important offenses which are covered under the offenses against property, and apart from that, cheating and mischief is also there. Okay, so broadly what areas you are going to cover in offenses against property is firstly theft, extortion, robbery, dacoity, criminal misappropriation of property, criminal breach of trust, cheating, mischief, and criminal trespass, house trespass, house breaking. That's all. And many a times we have seen in the previous year papers that many questions have been asked in this area, and mostly these questions are illustration based. Simply illustrations will be there, and you have to figure out whether the offense has been committed or whether the offense has not been committed, or if any offense has been committed, what is the offense that has been committed. So ये सब areas हैं जिसपे commonly question ask किए जाते हैं, और aggravated forms of theft, aggravated forms of dacoity, aggravated forms of these offenses that we had covered, aggravated forms of criminal misappropriation, aggravated forms of breach of trust. These are also some of the areas in which they are going to ask you specific sections in which this is there. Not much case laws are there. Few case laws you can easily remember. And these case laws only, like Ramjas versus State of UP. This case law has been asked in the cases of cheating. So less case laws are there, more illustration based study you have to cover. You have to conceptually, you need to have a clarity whether the offense has been committed or not, whether the ingredients are fulfilled or not. And apart from that, the aggravated forms of these offenses, you have to remember the specific sections. Because these offenses like theft, extortion, everyone remembers the sections of theft, extortion, robbery, dacoity. Everyone remembers. At least everyone is expected to, everyone who is a serious aspirant of any competitive exams, he is required to remember at least these sections which are there. But apart from that, you are also required, in order to clear the exam, in order to clear the merit list, you have to have the extra element. You need to step up your preparation. You need to also, you have to see that if any question has been asked which requires a thorough preparation, then you are able to fulfill that. Okay. So on this note, we'll start our discussion on offenses against property. And the first offense which we are going to cover is the theft.
So theft we already understand. Definition क्या है theft की? Section 378 में the theft has been covered. So theft basically has been covered from sections 378 to section 382 of the Indian Penal Code. Section 378 defines theft. Then you have section 379 which provides punishment for theft, and section 388 to 81, 82, these deals with aggravated forms of theft. Now what is the definition of theft? So that definition of the theft you must be remembering by heart. Everyone remembers the definition of theft as verbatim it is given. So the definition of theft is given, and apart from that there are 5 explanations which are attached to the definition of the theft. So we have to remember all these one by one, and apart from that certain illustrations under the theft, that also you are required to remember. Okay, so theft we simply understand theft क्या होता है भाई? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी और पर्सन की पोजीशन में है उसको आपने मूव कर दिया without the consent of the person in whose possession it is, then it is obviously a theft, and that the definition is stating also. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. मतलब जो कोई भी किस इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किस चीज को, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, कहां से, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, कैसे, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, क्या किया, ही एक्चुअली मूव्ड दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. सच टेकिंग मतलब क्या? सच डिसऑनेस्ट टेकिंग. So when this act has been committed, it is said that the person who has taken dishonestly is said to commit theft. And then there are 5 explanations which are attached to this definition. Explanation 1 talks about that since the offense of theft deals with what? Which kind of property? Only movable property. This is given here itself. So if a thing is not a movable property, it is not the subject of theft. But there are certain properties which are generally, they are immovable, but they are capable of getting movable. Like things that are generally attached to the earth, they are immovable. But as soon as they are severed, it may turn out to be a movable property. And by that act, suppose if there is a tree, which is generally an immovable property, and the tree has been severed from, tree is attached to the earth, tree has been severed, and the moment the tree has been severed, it becomes a movable property, it becomes a subject matter of theft. Otherwise, generally immovable properties are not subject matter of theft. These has been highlighted in explanation number 1 and explanation number 2. Things that are attached to the earth, as long as it is attached to the earth, is not being a movable property, it's not the subject of theft. But it becomes capable of being the subject of the theft as soon as it is severed from the earth. A moving, जो डिफिनीशन में मूव की बात की गई है, इसीलिए हम कहते हैं थेफ्ट में जो आपकी ये डिफिनीशन है, इससे 5 एसेंशियल्स निकल के आते हैं. व्हाट आर दोस 5 एसेंशियल्स? फर्स्टली, देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन. Dishonest intention is there. Then we have the property must be a movable property. Then the property must be in possession of some person.
then you have taken, that person has taken that property without the consent of the person in whose possession the property it is. And then finally, the last essential is moves. Moving of that property. Actual physical movement of that property with such dishonest intention. If all these ingredients are present, then it will be a theft. But this definition has also to be read with the explanations. And explanation 1 and 2 further states that generally things that are attached to the earth, not being a movable property, is not the subject matter of theft, but if it is capable of becoming a movable property, how will it become capable? जनरली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन अगर केपेबल है ऑफ बिकमिंग a movable property, how will it become a movable property? If you sever it, if you cut it down, then you can move it, na? Tree, as long as it is attached to earth, how will you move it? It cannot be moved. But we see that for many purposes, for furnitures, for woods, when the wood is required, the trees have been cut, and then the log of wood has been transported for different purposes. So as long as it is attached, it is not subject matter of theft, but as soon as it is severed from the earth, it becomes a movable property and it becomes a subject matter of theft. And moving, explanation 2 further states that moving affected by the same act which affects the severance may be theft. So your act of severance may fulfill the requirement of moving, which is highlighted in the definition of theft. Okay, so this is there. Then third explanation deals with removing an obstacle. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving. Suppose this is a slope and this is your home, and there is some husk or there is some property, some movable property which has been stationed here due to some obstacle. You have not moved that property, but you have removed this obstacle. And by the motion of gravity, it starts moving on its own and comes to a different location, and from there you have transported to your house. So that will also be considered as moving. Moving includes removing an obstacle which prevented any object or which prevented any movable property from moving, or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. So all these things are covered under the idea of moving that has been required in order to commit the theft. Moving includes removing an obstacle, moving includes separating it from the other thing, and moving also includes actual movement of that property. Okay. Then we have the next explanation, explanation 4, which is there. So explanation 4 states that a person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. So all these explanations which are there, they have been sufficiently substantiated with the illustration. So an animal, you can see, animal may also be considered if it's a precious breed of any dog. Theft can be committed with respect to that animal also. You have given a bait to that animal. कोई प्रेशियस ब्रीड था डॉग का, आपने उसको एक बेट दे दिया, वो एनिमल खुद ही चल के आ गया. और मूवमेंट में ऑल्सो बी अफेक्टेड. सपोज इफ देयर इज अ बुलक कार्ट विच इज कैरीड बाय some cattle or some any animal, and in order to affect that movement, in order to complete your dishonest intention of taking that property that has been carried by a bullock cart, you have changed its course, you have caused movement of that animal. That also be included within the definition of the movement that has been caused
in order to take the property dishonestly. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal. Theft can be committed of an animal also. Here you are giving bait, you are causing the animal to move. And to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. Suppose if the animal is carrying anything, if the animal is carrying a box of treasure and you are causing that animal to move, then that will also be considered as a movement which is required under section 378. And then the last explanation is the deals with the consent which is there. Consent mentioned in the definition may be either express consent or implied consent. So it is not expressly required that every time you are taking any movable property out of the possession of any person, expressly consent must be given. The consent may be express as well as the consent may be implied. So if the person has given you the consent, then obviously it will not be theft, because what section 378 states? It says that without that person's consent. So if the person has given the consent, it cannot be theft. But if without the consent of the person who is in possession, you have taken any property, then definitely it will amount to theft. Okay. So consent is also an important element. Now what do we understand by explanation 5? It says that the consent which is mentioned, it includes express as well as implied consent. Implied consent here becomes very important, because many a times you see that relations are such, जैसे दो दोस्त हैं उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दोस्त की एक लाइब्रेरी है, दूसरा दोस्त उसमें अकॉर्डिंगली विजिट करता है. So they have a common understanding that my friend can take any book which is there in my library. Express consent is not there, but understanding is there, implied consent is there. And in this case, if without the consent, if any person is taking, then he will not be held liable. Okay. So this is there. These all things are explained in the illustrations which are there. So we'll quickly see which illustrations are there, as they are going to ask you the question on illustration only. They'll give you the illustration, and then the operative part which is there in the illustration, they will either they'll change the language, either they will delete some element, but they are going to ask this question from illustration only, if it's directly with reference to section 378. So इसमें different example दिए हुए हैं. A cuts down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. So इसमें क्या है? A ने कट किया ट्री को, और ट्री कहाँ थी? Z के ग्राउंड में थी. इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि ट्री को ले लें आउट ऑफ Z's पोजीशन बिना Z की कंसेंट के. देन as soon as he has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. इसमें दोनों explanation 1 और explanation 2 आपको accordingly apply हो जाएगा. Okay. Here you will see explanation 1 and 2. Moving affected by the same act which affects the severance may be theft. As soon as he has severed the tree in order to such taking, he has committed the theft. Okay. Similarly, A puts a bait for dogs in his pocket and thus induces the dog to follow him. Here, if A's intention is to dishonestly take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. बेट रख दिया, किस इंटेंशन के साथ? कि Z का डॉग है, उसको चुरा लें. डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब क्या? Dishonest intention, dishonestly has been defined under which section? Here you will see.
causing wrongful loss to one person and wrongful gain to another person. So in context of theft, dishonest means I don't want to purchase the dog. I want to wrongfully gain that dog without giving the money. So for me, it's a wrongful gain. And to the person who has purchased the dog, who has given the money, to him, a wrongful loss has been occurred. So this is there. Okay. So dishonest intention, with this dishonest intention, the moment the dog starts following the bait that you had put, the offense of, it will be considered that movement has been committed. जो मूविंग का रिक्वायरमेंट है, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ये फुलफिल हो गया. जैसे ही डॉग जो है उस बेट को फॉलो करने के लिए द डॉग स्टार्ट्स मूविंग. ओके. A has committed the offense as soon as these dog has begun to follow A. Okay. A meets a bullock cart carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, the offense has been committed. ये भी मैंने आपको बताया. ये आएगा explanation 3. A person is said to cause a thing by removing explanation 4. Sorry. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, or to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. So that bullock is carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed the theft of the treasure. Okay. So causing an animal to move, it also includes moving everything which in consequence of such motion of the animal is moved by that animal. So the bullock is carrying what? It's carrying treasure. So this is also covered under, this is further example which is there of explanation 4. So 5 explanation हमें पता था. पहला क्या है? Things that are attached to earth is not the subject of theft. Moving may be affected of such thing by the severance. Explanation 2. Then removing an obstacle, or you have separating or actually moving. It is included within the definition of the term moving that property, moves that property. And then finally we have the animal, causing an animal to move, or whatever the animal is carrying is also considered to be moved by that animal. That will also be included within the expression of moving. And then finally we have the consent includes express and the implied consent. Then the next illustration which is there, here you will see, just a second. The next illustration which is there, A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft. Very easy example. Another important illustration that they go on to ask is, can you commit theft of your own property? Answer is yes. This has been covered. Here you will see. Suppose you want, your watch is not working properly, and you have given your watch to the pawner shop or to the person who repairs the watch. And the person has repaired your watch. Now when a person has repaired your watch, there is definitely the services that he has rendered, he is owing something in your watch. You are required to pay that person, that shop owner, for whatever the amount which is there, which is required for such repair. And when you have paid that amount, then only you can take your watch back. Now with the dishonest intention, if you want to deprive the shop owner
of the interest of the debt which is there upon you. That is the cost of repair. If you want to deprive him of that interest that he has in your watch, and with this dishonest intention, you have taken the watch forcefully without his consent, then it will be theft. So here you see that in this example, theft can be committed with respect to your own property also. But in the same example, you will see that if the watch owner has no debt or he cannot retain your watch for any service that he has rendered, then it may not amount to the theft, because there is no dishonest intention, there is no wrongful loss that has been incurred. So these are covered under illustration I. A delivers his watch to Z, a jeweler, to be regulated. Z carries it to his shop. A, not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security. मतलब A ने दिया वॉच किसी को, Z को, एक ज्वेलर था, कि वो जो वॉच जो है वो रेगुलेट हो जाए. अब A जो है not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security. कोई डेट नहीं है जिससे जो है jeweler might have retained the watch. Enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand and carries it away. कोई डेट नहीं था, कोई wrongful लॉस नहीं करने का इंटेंशन था, और जबरदस्ती आके उसने उसके शॉप से वो वॉच अपना पहन के चला गया. तो अदर ऑफेंसेस कमिट हो सकते हैं, बट ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज नॉट कमिटेड. Okay, no wrongful loss has been caused. No dishonest intention is there. Here A, though may have committed criminal trespass, he may have committed assault, he has not committed theft, inasmuch as what he did was not done dishonestly. Very important. Okay, often people get confused. Clearly this illustration is given and they will twist it. Suppose if he has repaired the watch and then he had the right to retain the watch for the cost of repair that he has incurred in that watch. अगर वही इसी एग्जाम्पल में अगर आप इसको मॉडिफाई कर दो और उसने वॉच को रिपेयर किया था, उसके पास राइट था कि वो वॉच को एज अ सिक्योरिटी रखे. क्यों एज अ सिक्योरिटी रखे? कि भाई जो उसने सर्विस दी है, जो उसने रिपेयर किया है, वो उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर कर सके, इसलिए एज अ सिक्योरिटी वो वॉच रख सकता है. And then if he has deprived of that property without his consent, it would have amounted to theft. But otherwise, in this case, in illustration I, it is not there. Illustration J, you'll see. If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security, and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, then he commits the offense of theft, because he is taking that watch dishonestly and he is depriving, he is causing wrongful loss to the person who is keeping that watch as a security for the cost that is there for that watch. Okay. So these are some important illustrations. A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. A जो है Z का दोस्त था और Z के लाइब्रेरी में बुक थी, वो गया उसके लाइब्रेरी में, उसके बिना एक्सप्रेस कंसेंट के उसने बुक ले ली फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग इट. कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था. Then the question arises whether it will be theft. The answer will be no. Okay. Here it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z's book. ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन 5 में कवर हो जाएगा ये. ठीक है, कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. और सेकेंडली, मोर इंपॉर्टेंटली इन दिस डिफिनीशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज ऑल्सो मिसिंग. ओके.
So 5 essentials of theft we understand: dishonest intention, movable property, possession out of the possession without the consent, and then moving that property in order to such taking. Theft is defined under section 378 and the punishment for theft has been provided under section 379. थेफ्ट से जो है 3 years आप याद रखोगे. पनिशमेंट कहाँ है? Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or with both. Okay. So 379 provides for punishment for theft. 380 to 82 deals with some of the aggravated forms of theft. Theft in dwelling house, theft by clerk or servant of property in possession of master. Dwelling house में theft है तो कौन से सेक्शन में है? 380. थेफ्ट अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट करता है, किस चीज का? जो प्रॉपर्टी मास्टर की है उसका, मास्टर के पोजीशन में है, उसके रिस्पेक्ट में क्लर्क या सर्वेंट कोई थेफ्ट कर दे तो एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाता है 381. यहां 7 year तक सजा जाती है. ओके. थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट. सो 3 एग्रेवेटेड फॉर्म है, सिंपली आपको याद रखना है. डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, ये लास्ट वाला है 382. इसके पहले वाला क्या है? क्लर्क और सर्वेंट. इसके पहले वाला क्या है? 378 थेफ्ट हो गया, 379 पनिशमेंट हो गई, 380 ड्वेलिंग हाउस. सो ड्वेलिंग हाउस, क्लर्क, सर्वेंट, and then death, hurt or restraint in order to commit theft. So these are some of the important sections which deals with the aggravated forms of theft. You have to remember that. Now we come to the next offense under offenses against property, that is extortion. Extortion मतलब क्या? थेफ्ट तो मतलब आपको समझ में आ गया, बिना किसी कंसेंट के, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन से ले लेना डिसऑनेस्टली, ये हो गया थेफ्ट. कंसेंट मिसिंग है. लेकिन अगर आप यही एक काम करो, प्रॉपर्टी ही लेनी है और किसी को फियर दे दो, किसी को डरा दो, धमका दो और तब कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर लो, यहां भी तो डिसऑनेस्टली आपने लिया प्रॉपर्टी. सो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज ऑल्सो देयर इन एक्सटॉर्शन. ये क्या हो जाता है? ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. डिसऑनेस्टली ले लिया किसी से प्रॉपर्टी, उसे कोई डरा के धमका के, ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन. हियर विल नाउ सी एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन. दिस इज द लेमैन टर्म. भाई लेमैन टर्म में भी पता होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो बेसिक चीज ही नहीं याद आ पाती है. ओके. सो एक्सटॉर्शन सेज दैट हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, intentionally puts any person in fear of injury to that person or to any other person, and thereby, fear of injury is important, thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security. So मतलब intentionally किसी को fear of injury में डाल के, या फिर तो जिस पर्सन को डाल रहे हो उसे, या फिर किसी और पर्सन को डाल दो fear of injury में, और उस fear of injury से dishonestly उस पर्सन को इंड्यूस कर दो कि वो कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सके उसको वो डिलीवर कर दे. देन दैट इज नोन एज द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 383 of the Indian Penal Code. So section 383, simply we can understand that intentionally putting any person in fear of injury, and then dishonestly inducing him to do what? To deliver any property
or any valuable security or anything that can be converted into valuable security. Anything signed or sealed that can be converted into valuable security. Valuable security कहाँ बताई है, ये सब पता होना चाहिए. काउंटरफीट का डेफिनेशन क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है. फिर जाइए डेफिनेशन क्लॉज में. हियर यू विल सी वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30. पहले तो सेक्शन ही याद होना चाहिए. यहां पे आप ये देखोगे जितने भी सेक्शन है बड़े इंपॉर्टेंट है. 19 तो चलो सब बता ही लेते हैं, लेकिन इधर से यहां से 23 ऑनवर्ड्स. रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस 23 में है, डिसऑनेस्टली 24 में है, फ्रॉडलेंटली 25 में है, रीजन टू बिलीव 26 में है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट 27, काउंटरफीट 28, डॉक्यूमेंट 29, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी 31, विल 32, 33. ये यहां से जो है 33 तक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस बाय हार्ट. वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब कहाँ, जहां भी कोई राइट क्रिएट होती है, एक्सटेंड होती है, ट्रांसफर होती है, रेस्ट्रिक्ट होती है, एक्सटिंग्विश होती है. सो whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or is not under legal right. So कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट का क्रिएशन, एक्सटेंशन, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलीज उससे डील करता हो, इट कैन बी वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ओके, सो वी आर डीलिंग सेक्शन 383. So the definition we understand: by intentionally putting any person in fear of injury, you have dishonestly induced that person to deliver any property or any valuable security or anything that can be converted into valuable security. So that is the entire idea of extortion. The offense gets completed as soon as the delivery of property that is there is the actus reus of this offense. Fear of injury is very important in the offense of extortion, that you must remember. You have intentionally put any person in fear of injury. किसी को धमका के जो है उससे प्रॉपर्टी ले लेना, it's extortion. Person put in fear may deliver the property to anyone, because here you will see the person induces the person so put in fear to deliver to any person. Delivery of the property can happen to any person. It's not necessary that the person who has put in fear, only that person, only to that person the property must be delivered. He can ask that some other person who is there, उसको जाके deliver कर दो. इसका एग्जाम्पल देख लो. आपके खिलाफ जो है एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देंगे न्यूज़पेपर में, नहीं तो अभी जो है आके मेरे घर में 50,000 रुपए जमा कर दो. तो आपके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देंगे. फियर ऑफ इंजरी, इंजरी मतलब अगेन सेक्शन 44. फिर आप जाइए डेफिनेशन क्लॉज में. एनी हार्म व्हाटसोएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. रेपुटेशन, so harm to the reputation is also an injury. So fear of any injury यहां से कंप्लीट हो गया. तो हमने आपको थ्रेट दे दी कि आपके खिलाफ न्यूज़पेपर में जो है कुछ छाप देंगे जिससे आपका रेपुटेशन जो है हैम्पर हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी. नहीं तो अभी लाके जो है मेरे घर में 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो मेरा दोस्त जा रहा है उसको 50,000 रुपए दे देना, नहीं तो मेरे ऑफिस में जाके 50,000 रुपए जमा कर देना. So here what you have done, fear of injury you have given, and thereby you have caused dishonest inducement to deliver 50,000 rupees, and thus he induces Z to give him the money. A has committed extortion. So ये हो गया offense of extortion. Illustration A यही चीज डील करता है.
सिमिलरली एक और थ्रेट दे दिया that A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain monies to A. Z signs and delivers the note. A commits extortion. So fear किसको कर सकते हैं? Fear उस आदमी को भी कर सकते हैं या किसी और पर्सन को भी कर सकते हैं. आपके चाइल्ड के खिलाफ मैंने आपको थ्रेट दे दिया, उसको जो है बंधक बना लेंगे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर देंगे उसका, नहीं तो हमको तुरंत पैसा दे दो, इस प्रॉमिसरी नोट पे साइन कर दो, इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे साइन कर दो. आपने तुरंत जो है कर दिया. A has committed extortion. Theft can be committed with respect to movable property only, but in extortion there is no such requirement, and that is very the fundamental difference also. यहां पे आप देखोगे एक्सटॉर्शन में कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है. डिलीवर्ड टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, हियर यू विल सी एनी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में भी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल. A threatens to send club men to plow up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B. गुंडे भेज देंगे, नहीं तो हमको जो है अभी ये जो है साइन करके दे दो ये बॉन्ड, and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. Fear of injury is there, delivery of property is there. A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into valuable security, A has committed the extortion. So यही है basic idea is the fear of injury and then delivery of property. ये दो चीज है important आपका extortion में. So section 383 deals with extortion, and the punishment for extortion is also same, 3 years. Theft का 3 याद रहेगा, extortion का भी 3 ही है. Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment for a term which may imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. अब ये है putting person in fear of injury in order to commit extortion. So यहाँ पे important चीज जो है वो in order to commit है, in order to commit extortion. अगर extortion commit हो गया तब तो 383 लग जाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन अगर कमिट नहीं हुआ, अगर अटेम्प्ट है और उस कोर्स में इन ऑर्डर टू कमिट सच एक्सटॉर्शन यू आर गिविंग एनी पर्सन कॉजिंग फियर ऑफ इंजरी टू एनी पर्सन, देन देयर इज सेक्शन 385 दैट बिकम्स एप्लीकेबल. अटेम्प्ट है, एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ, 383 में तो एक्सटॉर्शन हो जाता है कमिट, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन अगर मान लो अटेम्प्ट ही है तो वो केसेस जो है 385 में कवर हो जाते हैं. Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt, aggravated form of extortion. So 383 आपको याद हो गया. Punishment 384, 385 में in order to commit extortion अगर आप fear of injury दे रहे हो. Then 386 है extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt. ये in order to commit मतलब attempt है. In order to commit the extortion, you have put any person in fear of death or grievous hurt. Extortion by threat of accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life. Extortion क्या कर रहे हैं? Threat किस चीज का दे रहे हैं? कि तुमको उस किसी ऑफेंस से अक्यूज कर दिया जाएगा और जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है या imprisonment for life है. 388 Putting person in fear or accusation of offense in order to commit extortion. 389 So theft हो गया, extortion हो गया. Now we come to robbery and dacoity. तो ये सब तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीजें. रॉबरी जो है 390, रॉबरी एंड dacoity 392 ऑनवर्ड्स डील करता है. 390 डिफाइंस रॉबरी. ओके. 391 defines dacoity.
392 provides punishment for robbery. 393 provides punishment for attempt to commit robbery. 394 provides for punishment for voluntarily causing hurt while committing robbery. 395 is important. It deals with punishment for dacoity. 396 deals with dacoity with murder. These are some of the important sections which deals with robbery and dacoity. 390 में आपका robbery defined है. 391 में आपका dacoity defined है. 390 हो गया, 391 हो गया. Punishment for robbery पहले आएगी क्योंकि robbery पहले defined है 392 में. बीच में आपके attempt है और aggravated form है. उसके बाद 395 में punishment for dacoity है. तो 390, 91, 92 और 95 ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. उसके बाद जो है ये बेसिक सेक्शंस हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीवेटेड फॉर्म्स भी हैं जो आपको याद करने हैं. बेसिक सेक्शंस में 90, 91, 92 एंड 95 है. वेरी बेसिक. रॉबरी 90, 91 dacoity, punishment for robbery 92, punishment for dacoity 395. Okay. Now we'll see robbery. So theft can also become robbery. Extortion can also become robbery. Some element you add to theft or extortion, that element is what? Death, hurt or wrongful restraint, or fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. थोड़ा थेफ्ट को और थोड़ा एक्सटॉर्शन को अगर आप एग्रेवेट कर दोगे, उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दोगे तो वो रॉबरी बन जाता है. सो इन ऑल रॉबरी देर इज आइदर थेफ्ट और देर इज एक्सटॉर्शन. एंड दिस subject has been accordingly covered under section 390. In what cases theft will become robbery? In what cases the extortion will become robbery? So in all robbery, section 390 states there may be either the theft or the extortion. When does the theft become robbery? So theft will become the robbery in order to the committing of the theft, in committing of the theft, or in carrying away or attempting to carry away the property obtained by theft. So theft करने जा रहे हैं या theft actually commit कर रहे हैं या theft commit कर लिए और property लेके जा रहे हैं. In order to commit the theft, in committing of the theft, in actually committing, or in attempting to carry away the property obtained by theft. Then what you had done? The offender for that end, ये बहुत important, for that end. For what end? Commission of the theft, carrying away the property obtained by theft. For that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person. So अब दो सेक्शन बन गया. एक voluntarily cause हो गया. Voluntarily causes or attempts to cause what? Death, hurt or wrongful restraint, or attempt to cause death, hurt or wrongful restraint. एक ये पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट है fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. So voluntarily causes or attempts to cause what? Death, hurt, wrongful restraint, or fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. For this end, for the end of what? For the commission of the theft. For what end? In order to committing the theft, in actually committing the theft, in order to commit the theft, and in carrying away the property obtained by theft. The offender for this end voluntarily causes or attempts to cause
the death, hurt or wrongful restraint, or the fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. So if this element is added to the definition of theft, the theft will become robbery. सिंपल एग्जाम्पल इसका क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में? अगर एक पर्सन है, उसकी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड चेन है, वो आपको डिसऑनेस्टली आपको चाहिए, आपने उसको तुरंत जमीन पे लेटा के उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसका कर दिया और वो चेन उससे ले लिया, ज्वेलरी उससे ले ली। सो थेफ्ट किया, हाँ कैसे? डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, विदाउट कंसेंट था, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी था। और इस थेफ्ट के कमीशन में you have committed what? In committing the theft, you have caused wrongful restraint. Voluntarily you have caused wrongful restraint. Then it will become robbery. Exactly यही example दिया हुआ है illustration A में. A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without his consent. So he has committed theft. There can be no robbery in which either the theft is not there or the extortion is not there. So here A has committed theft. So firstly we will see for robbery whether the theft is committed or the extortion is committed. And when the theft or extortion, either of them, if it is established, then we see that whether the aggravating circumstances is there or not. Theft के aggravating circumstance क्या है? Causation of death, hurt or wrongful restraint, attempt to cause death, hurt or wrongful restraint, causation of the fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint. So these are there. Okay. So here A has committed theft, and in order to committing of the theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. So उसका ले लिया, उसमें उसको wrongfully restrain कर दिया या जो भी किया हो offense. Okay. Death, hurt, wrongful restraint, everything is covered. Okay. So this is the circumstance when theft becomes robbery. Another situation is when the extortion becomes robbery. So if similarly we see in extortion what is there? Fear of injury and delivery of property. Just you add on some elements. What is the element? Presence of the person, presence of the offender. And secondly, then and there the property is getting delivered. Then extortion will become robbery, provided the offender is present and the nature of fear which is there, nature of fear is death, hurt or wrongful restraint. So here we will see extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence. So यहाँ presence है of the person put in fear and commits extortion by putting that person in fear of injury. तो है, injury तो broader category है. Now you specifically define what the nature of fear is there in order to make the extortion get covered under robbery. Fear of instant death, fear of instant hurt or fear of instant wrongful restraint to that person or some other person. And by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. Then and there. Presence है, then and there है. Second important thing, here you will see presence, then and there, the delivery of property is there. And the nature of the fear is fear of instant death, instant hurt, or instant wrongful restraint. The offender is said to be present if he is sufficiently near. इसका एग्जाम्पल यही है. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हाईवे पे आप मिले और आपने जो है एक पर्सन था उसके चाइल्ड को पकड़ लिया और कहा अभी आई विल थ्रो हिम डाउन, अभी इसको खाई में गिराएंगे, आई विल फ्लिंग हिम डाउन टू द प्रेसिपी,
unless you deliver me 20,000 rupees immediately. So मैंने धमकी दी और आपने 20,000 रुपए तुरंत दे दिया मुझे. So fear of injury थी and delivery of property थी, extortion हुआ. नेचर ऑफ, अब इसमें आप देखोगे प्रेजेंस थी, हाँ प्रेजेंस थी. देन एंड देयर द डिलीवरी इज देयर, यस डेफिनेटली इट इज देयर. वहीं आपने 20,000 रुपए दे दिए. एंड देन थर्ड एलिमेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ फियर? फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ टू योर चाइल्ड. देन द एक्सटॉर्शन विल बिकम रॉबरी. दिस एग्जाम्पल इज गिवन अंडर illustration C. Flinging down the child to a precipice if he delivers his purse, unless he delivers his purse. Okay, so this is there. Fear of instant death, instant hurt is there, and the person is present also, and then and there the property is delivered. So A has committed extortion, which is aggravated into the robbery. Okay, illustration D is very important because often people get confused. A obtains property from Z by saying your child is in the hand of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. बस बताया कि आपका जो है लड़का हमारे गैंग के कब्जे में है, 10,000 रुपए दे दो, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा. So now the people they think that fear of death is there, therefore the extortion might become robbery in this case. And the answer would become wrong. Because this is extortion, this is not robbery, because the fear, the nature of the fear, instant death is not there, presence is not there. So when fear of instant death is not there, he is giving the fear of death, but fear of instant death is not there. बोल रहा है कि आके परसों दे देना, नरसों दे देना, पैसा पहुंचा देना, unless your child will be put to death. Neither there is presence nor there is fear of instant death. Therefore, it will not be robbery. It will only be extortion. Often people get confused. So ये गलती इस तरह की मत करिएगा. Then dacoity, very simple. When 5 or more person, they conjointly commit or attempt to commit robbery, or where whole number of person, कुल मिला के जो है, जो लोग पर्सन रॉबरी कमिट कर रहे हैं वो 5 और मोर हैं, then every person so committing, attempting or aiding to commit is said to commit dacoity. रॉबरी का एग्रेवेटेड फॉर्म dacoity है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रेवेटेड फॉर्म रॉबरी है, रॉबरी का एग्रेवेटेड फॉर्म dacoity है. जब रॉबरी में 5 और अधिक लोग हो जाएं तो dacoity हो जाता है. 391 में बताया है conjointly. Okay, 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery, or where the whole number of person conjointly committing or attempt to commit robbery and person present and aiding is 5 or more, then it will be dacoity. Okay. Punishment for robbery, 393 था रॉबरी, इसका पनिशमेंट 392 में है. पनिशमेंट कितनी है 392 में? 10 years. और रॉबरी अगर सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हो रही है, मतलब रॉबरी अगर नाइट में हो रही है और हाईवे पे हो रही है, तो वहां पे अग्रेवेटेड पनिशमेंट मिलती है, 14 years तक जा सकती है. जनरली तो 10 years तक है. And shall be liable to fine, and if the robbery be committed on the highway, अगर रॉबरी जो है हाईवे पे कमिट हो रही है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के बीच में अगर रॉबरी कमिट हो रही है, हाईवे पे कमिट हो रही है, देन इम्प्रिजनमेंट मे बी एक्सटेंडेड टू 14 years. वहां पे ज्यादा पनिशमेंट मिलती है, जनरली 10, अदरवाइज 14. ये दिया हुआ है सेक्शन 392 में. ओके, एंड देन सेक्शन 395, अनदर बेसिक सेक्शन, पनिशमेंट फॉर dacoity. Whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years. Okay, life imprisonment मिल सकती है for dacoity.
Dacoity with murder, important section. Often it is asked. It's covered under section 396. Section 399 deals with preparation to commit dacoity. Very important section. One of those sections where the preparation is itself punishable. Preparation generally punishable नहीं होता है. Attempt punishable होता है. Preparation generally punishable नहीं होता है. यहाँ पे आप देखोगे dacoity के केस में dacoity एक ऐसा ऑफेंस है जो हर स्टेज पे punishable होता है. Preparation, attempt, commission तीनों पे. Okay. So section 399 makes preparation of the dacoity also substantively punishable. So these are the important basic sections. Now we all also deal with certain aggravated forms. Attempt to commit robbery 393, voluntarily causing hurt in committing robbery 394, dacoity with murder 396, 397 dacoity, robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt, attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट dacoity, ये मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही ऑफेंस है. पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ dacoits, अपने आप में बस आपने गैंग ज्वाइन कर ली है dacoit की, सब्सटैंटिव पनिशमेंट इज देयर 400. पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव, गैंग ऑफ dacoit 400 है, गैंग ऑफ थीव 401 है. अगर आपने ज्वाइन कर ली है, बिलोंग कर रहे हो गैंग ऑफ dacoit का या गैंग ऑफ थीफ का, जो हैबिचुअली एसोसिएटेड है थेफ्ट रॉबरी करने के लिए, तो ये यहाँ पे पनिशमेंट है. असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग dacoity, मिल गए बस dacoity कमिट करने के लिए, ये भी सब्सटैंटिव पनिशमेंट है. सो दिस इज देयर. थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, dacoity हो गया. नाउ विल डील विद क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. थेफ्ट में भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए, एक्सटॉर्शन में भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए. इन दोनों में डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए तो मतलब रॉबरी dacoity में भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए. नाउ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट हैज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 403. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका इम्प्रिजनमेंट 403 में ही दिया हुआ है. 404 इसका एग्रेवेटेड फॉर्म है, आप यहां देखोगे. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person, तो ये एग्रेवेटेड फॉर्म है. 405 में आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403 में है, 405 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. इसका पनिशमेंट अलग से है, लेकिन मिसअप्रोप्रिएशन का पनिशमेंट उसी में दिया हुआ है. ओके. व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन? लेमैन टर्म्स में क्या है मिसअप्रोप्रिएशन? मतलब क्या? कहीं भी प्रॉपर्टी आपको मिल गई, चोरी आपने नहीं की, किसी के कंसेंट, किसी के बिना कंसेंट के किसी के पोजीशन में है प्रॉपर्टी, वहां से आपने नहीं निकाला डिसऑनेस्टली. किसी को फियर ऑफ इंजरी देके आपने कोई प्रॉपर्टी का डिलीवरी नहीं ली, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस आ गए जहां आप कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई और यू आर इन ए पोजीशन, जब टेकिंग किया था, जब मूवमेंट किया था, तब तो इनोसेंट इंटेंशन था, आगे जाके डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, तब क्या कोई ऑफेंस होता है? बिकॉज थेफ्ट तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी देखा जाएगा ना. उस समय मान लो आपके दोस्त में अंडरस्टैंडिंग है, आपके दोस्त का इंप्लाइड कंसेंट है, उस समय आपने ऑफेंस नहीं कमिट किया थेफ्ट का, लेकिन बाद में आपको जो है इंटेंशन, कुछ लड़ाई हो गई, आपका इंटेंशन बाद में बदल गया, आप गए उसको जाके प्रॉपर्टी बेच आए, पैसा अपने पास रख लिया, बुक किसी और की थी, उसका रॉन्गफुल लॉस हुआ कि नहीं? आपके पास रॉन्गफुल गेन हुआ कि नहीं? डिसऑनेस्ट एलिमेंट आया कि नहीं? तो क्या कोई ऑफेंस होगा? सो दीज टाइप ऑफ ऑफेंसेस आर कवर्ड अंडर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. अगेन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी or dishonest misappropriation also deals with movable property. So it says that whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, dishonestly misappropriates or converts to his own use
any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. So यहाँ पे 2 साल की सजा मिलती है ये आपको. So here the thing which is required is dishonestly misappropriates or converts to his own use, and then thirdly it must be a movable property, then it is criminal misappropriation. इसके केस कैसे होते हैं? जनरली जब कोई गुड अबैंडन हो जाता है, किसी के पोजीशन में नहीं रहता है, वहां पे डिफिकल्टी अराइज होती है कि कोई अबैंडन चीज का मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है. क्या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, क्या उसके रिस्पेक्ट में आप मिसअप्रोप्रिएशन कर सकते हो? अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, you cannot be held liable for misappropriation of your own property. Other thing is that if abandoned goods are there, so in that context it becomes very difficult, because ultimately you have with respect to abandoned good, misappropriation is not there. But if abandoned goods are there, if abandoned movable property is there, then we have to figure out whether what is the intention, whether it has been lost or whether it has been specifically abandoned. And then you have come across that thing. If it is abandoned, then definitely misappropriation will not be there. But if by some mistake any person has lost any property, वो जा रहा था, गलती से उसका रिंग जो है ढीला था, गिर गया. So ring that is lying on the road, you came and you picked up that ring, and without making any effort for discovering the true owner of that ring, immediately you went to the jeweler and sold that ring and appropriated, converted to your own use that property, then you have committed the offense of criminal misappropriation of property. Okay, so that is why. इसके आप एग्जाम्पल देखो. A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. जैसे मैंने आपको दोस्त का एग्जाम्पल बताया था. लाइब्रेरी में जब बुक लिया, जब टेकिंग कर रहे थे प्रॉपर्टी की, उस समय तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था. A is not guilty of theft. But if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use. Mistake से भी आ सकती है प्रॉपर्टी, कंसेंट से भी आ सकती है. At the time of the taking it was not theft, but later on you figured it out, और later on कुछ ऐसा circumstance हुआ कि आपको लगा अपने लिए यूज कर लेंगे. डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जस्ट मेंटल एलिमेंट से ही ऑफेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे. Okay, he is guilty of the offense under this section. A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. So this illustration was we also covered in theft. So he has not committed the offense of theft. But if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of the offense under this section. Okay. So possession was innocently acquired, but subsequent knowledge and subsequent intention and subsequent contention, subsequent act by which the retention becomes unlawful and retention becomes wrongful. It is basically the cases of criminal misappropriation. Okay. Converting to your own use or misappropriating. Explanation 1 says that dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सोच लिए, कोई चीज पा गए, सोचे उसको ऐसा यूज कर लें, उसको अपने यूज के लिए ऐसे कन्वर्ट कर लें और बाद में उसको रिटर्न कर देंगे, तब ऑफेंस नहीं हुआ भाई. तब भी ऑफेंस हुआ. Dishonest misappropriation for a time only is also a misappropriation. मतलब A finds a government promissory note belonging to Z.
अगर मुझे कोई चेक मिला जो जी का था और मैंने उसको क्या किया, वो ब्लैंक चेक था, मैंने उसको यूज करके, मैंने ये नहीं चाहा कि मैंने उसको पूरा यूज कर लूंगा, मैंने सोचा मीन वाइल जब तक जो है इसको कहीं ऐसा अटैच कर दें एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन और बाद में इसको जो है रिटर्न कर देंगे। ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जी प्लेजेस इट विद द बैंकर एज अ सिक्योरिटी और अ लोन इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जी, इंटेंशन था कि बाद में रिस्टोर कर देंगे। ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो यहां पे गलत मत कर देना, डेफिनेटली ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन 2 ये बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी, he has come across any property which is not in possession of any person, then he must definitely make a valuable effort within a reasonable time. He must keep that property immediately. He should not dispose the property. He must make an effort to figure out who the true owner of that property is. आप जा रहे हो, आपको एक रिंग मिली, आपने अपने दोस्त, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपने अपने एक दोस्त की रिंग देखी थी, आपको बड़ी अच्छी लगी, एक दिन आप दूसरे दिन आए, आप देखे कॉलेज के प्रेमाइसेस में वही रिंग गिरी हुई है। आपको पता है, यू कैन डिस्कवर द ट्रू ओनर इवन इफ यू हैव फाउंड द प्रॉपर्टी यू आर नॉट अवेयर, देन ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म द अथॉरिटीज दैट आई हैव फाउंड द रिंग। सो बोथ द केसेस, you are already aware and you didn't disclose, you didn't make any effort for delivering that thing to the real owner, or you'd have, despite of not knowing anything, you could have made an effort to discover the true owner, and without making an effort immediately you have converted to your own use, you have committed an offense under the section. Okay. A finds the rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belong, A picks up the rupee. ये इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार लोग गलत करते हैं, बार बार क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी है कि बार बार पढ़ाओ और बार बार लोगों को बताओ और बार बार यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ए फाइंड द रूपी ऑन द हाई रोड, नॉट नोइंग टू whom द रूपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रूपी। हैज ए कमिटेड एनी ऑफेंस? नॉट येट, ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ पिकअप ही तो किया है, ए पिक्स अप द रूपी, उठा लेना कोई ऑफेंस थोड़ी ना है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफेंस है, कन्वर्जन टू योर ओन यूज ऑफेंस है। ओके, ए फाइंड द लेटर ऑन द रोड containing a bank note from the direction and contents of the letter, he learns to whom the bank note belongs. चेक था, उसमें सब लिखा हुआ है, किसका नाम है, कहां से है चेक, लेकिन आपका जो बियरर है वहां पे ब्लैंक है, अपना नाम भर के तुरंत डिपॉजिट करा लिए, पैसा अकाउंट में आ गया, मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। He appropriates the note, he is guilty on offense under this section. A finds the check payable to the bearer, he can from no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. Same example है, A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriates the check, he is guilty of an offense. A sees Z drop his purse with money in it. अब देखो, A picks up the purse with the intention of restoring it to Z. अभी तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, पैसा पर्स गिरा हुआ था जमीन पे, उसको देखा कि गिरते हुए पैसा उठा लिया कि दे देंगे वापस, अभी तक कोई ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, बट आफ्टरवर्ड अप्रोप्रिएट्स लेटर ऑन, उसको जो है अपने जो है उसमें से पैसा निकाल के गए अपना चाट खा लिए, हो गया ऑफेंस, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस। A finds the purse with money not knowing to whom it belongs, he afterwards discover that it belongs to Z, appropriates to his own use. Simple explanation we had dealt. Then aggravated forms, पर्सन मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी के साथ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कर दिए, बढ़िया है भैया, पोजीशन में तो है नहीं, ले लो उसकी प्रॉपर्टी, एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाता है। जनरली 2 है, यहाँ 3 है साल का पनिशमेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405।
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है, इसमें भी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज है, लेकिन एडिशनल एलिमेंट है कि प्रॉपर्टी जो है 403 में कैसे मिलती है, आपने ढूंढ ली, लेटर ऑन डिस्कवर कर ली, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट से मिला, रास्ते में जा रहे थे कुछ मिल गया, innocently you have come across some property, or you have found some property, you have found some abandoned goods, and then later on you have converted to its own use without discovering the true owner. Dishonest intention is there, so that is misappropriation of property. But if the property is specifically entrusted to you, there is a fiduciary relation, there is some dominion over the property, and the property has been, there is a specific entrustment of the property. Property आपको entrust की गई थी, and then you have dishonestly misappropriated or converted to your own use that property. So since there is another element of entrustment, एक entrustment से एक obligation है आपके ऊपर, एक entrustment थी आपके ऊपर, उसके वायलेशन में आपने जो है कन्वर्जन कर लिया या यूजेज और डिस्पोजल कर लिया, इन वायलेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, then it becomes an offense of criminal breach of trust. Here you have betrayed the trust of a person, and then you have converted to your own use, then you have used, then you have disposed a thing, then you have used a thing, then you have misappropriated the thing against the entrustment, against the dominion that has been given to you. Then it's a different offense of criminal breach of trust. Whoever being in any manner entrusted with property, being in any manner entrusted with the property or with any dominion over the property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law in which such trust is to be discharged, or in violation of any legal contract which has been made touching the discharge of such trust, then that person has committed criminal breach of trust. मतलब क्या, there is entrustment or there is dominion over the property, then what is the element? Dishonest misappropriation or convert to own use, or either this thing is happening, so there was an entrustment or dominion over the property that you are exercising, and then what did you do is either dishonest misappropriation or conversion to your own use was there, or what happened was usage or disposal of that property in violation of what? Of any direction of law. Violation of any direction of law. आप एम्प्लॉयर हो, बाई लॉ आपको रिक्वायर है कि आप हमारी सैलरी में से कुछ पैसा निकाल लो और कोई फंड में जमा कर दो। आपने क्या किया, हमारा पैसा तो काट लिया, फंड में जमा नहीं किया, अपने पास रख लिए इंटरेस्ट भुनाने के लिए। सो वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ और वायलेशन ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, contractual obligation. So entrustment is there, and then dishonest misappropriation or usage or disposal in violation of the direction of law or violation of any legal contract. So this is there. You are entrusted with the property,
or dominion over property, then you have either dishonestly misappropriated or converted to your own use, or you have dishonestly used or disposed of that property in violation of any direction of law. This is there. क्लोक रूम में सामान जमा किए, सामान वहां से गायब हो गया, criminal breach of trust. A, being the executor of the will of a deceased person, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effect according to the will and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया. एम्प्लॉयर है, वो किसी फंड में उसको जमा करना था, अपने पास रखा हुआ है. आपका पैसा तो काट लिया लेकिन अपने पास रखा हुआ है. A is residing in Calcutta, is agent for Z residing at Delhi. एजेंट का केस है, ये इंपॉर्टेंट है. Express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z shall be invested by A according to Z's direction. दो जगह लोग रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में कि जो भी पैसा रिसीव करेगा, जो पैसा दे रहा है उसके डायरेक्शन के हिसाब से होगा. उसने पैसा दिया with directions to A to invest in some company. इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. So usage or disposal contrary to the contract, that person disobeys the direction and employs the money on his own business. It's criminal breach of trust. लेकिन यहां भी आप देखोगे dishonestly है, dishonestly misappropriates or in dishonestly uses or disposes in violation of any law or in violation of the contract. अगर dishonestly नहीं है तब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगता है. ये एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, इलस्ट्रेशन डी. बट इफ इन ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट फॉर दीज एडवांटेज नॉट इन सम कंपनी बट सम अदर एंटिटी ही हैज टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट दैट हैज बीन रेमिटेड, देन इट विल नॉट बी, इवन इफ ही हैज incurred a loss, it will not be a criminal breach of trust. जो लॉस इंकर किया है उसके लिए एक सेपरेट सिविल केस फाइल कर सकता है. ये एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन डी में. ओके, दिस इज देयर. कैरियर को इंटरेस्ट किया गया था विद प्रॉपर्टी, ही हैज मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी, कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. पनिशमेंट कितनी है? 3 years विद फाइन और विद बोथ. 406 में है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई कैरियर, तो 405 हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 406 हो गया उसका पनिशमेंट. 407 क्या हो गया? बाय कैरियर. बाय क्लर्क और सर्वेंट 408. सो कैरियर हो गया पहले 407, 408 हो गया क्लर्क और सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट अगर कर दे, बैंकर कर दे, मर्चेंट कर दे 409. सो ऐसे करके याद रखो 407, 8, 9 कैरियर, क्लर्क, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट. ओके, 7, 8, 9 ये हो गए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एग्रेवेटेड फॉर्म. स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से ऑब्टेन की जाती है उसको स्टोलन प्रॉपर्टी बोला जाता है. 410 में बताया गया है. ओके, और अगर आपको पता है कि कोई पर्सन जो है चोरी करके एक बोतल ले आ रहा है, चोरी करके रिंग ले आ रहा है, और उसने आपको दे दिया कि ये चोरी का सामान है, इसको अपने पास रख लो 2 दिन के लिए. So if you have dishonestly received also such stolen property, then it will be an offense under section 411. 3 साल की सजा होती है इसमें. Dishonestly receiving stolen property in the commission of a dacoity, habitually dealing in stolen property, ये सब important. Cheating. Cheating मतलब क्या है? किसी को डिसीव कर देना. किसी को डिसीव करो, जो सच है उसको झूठ बता दो, जो झूठ है उसको सच बता दो. डिसेप्शन. सो बाय सच डिसेप्शन क्या कर दो? फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट कर दो. किस लिए? कोई प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी आपके पास है वो आप प्रॉपर्टी रिटेन कर लो. सो डिसेप्शन कॉज करके बाय फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट आपने कर दिया. फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डू व्हाट? either to retain any property or to deliver any property. और सेकेंड एलिमेंट है चीटिंग का, 415 में ये सब चीजें दी हुई हैं. और इंटेंशनली या फिर आपने इंड्यूस कर दिया
किसी पर्सन को कि वो कोई काम करे या वो कोई काम ना करे, टू डू और omit to do something which he would have otherwise not done had he not been deceived. डिसेप्शन कॉज करके किसी अदर पर्सन को कोई एक्ट के लिए आपने किया कि वो करे या फिर वो काम ना करे। अब वो काम वो ना करता अगर वो डिसीव ना हुआ होता तो, और जिससे उसको हार्म हो गया, तो ये हो गया चीटिंग, डिफाइंड अंडर सेक्शन 415। ओके, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived. So by deception, fraudulently or dishonest inducement is there to deliver any property or to consent to retain the property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do something which would not done or otherwise done had he not been deceived, and which has resulted, such act or omission has resulted in the harm likely omission causes or is likely to cause damage or harm to the person in body, mind, reputation or property. Then that person who has caused such deception and thereby such induce the person to do, or by such deception he is fraudulently and dishonestly or dishonestly induced to deliver any property or retention of any property, consented to the retention of the property, then that person is liable for cheating. A by falsely pretending. Explanation ये क्या है? Dishonest concealment of fact is a deception. चीटिंग के जो है आपको ये ज्यादा पूछेगा, चीटिंग है, मिसचीफ है, इसके इलस्ट्रेशन, सारे इलस्ट्रेशन ध्यान में होने चाहिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो चलो मेंस में आएगा, यहां पे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फॉल्सली प्रिटेंडिंग कर रहे थे टू बी इन सिविल सर्विस एंड देन इंटेंशनली डिसीव्ड द जी and dishonestly induced him to let him have on credit certain goods which he does not mean to pay, A cheats. Deceiving, dishonestly inducement, fraudulent inducement, and then retention of the property. So ये क्या हो गया? Cheating हो गया। A by falsely pretending to be in the civil service intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods on which he does not mean to pay. A cheats. A by putting a counterfeit mark on an article. Counterfeit mark लगा के deceive कर दिया. Deceives Z to believe that the article was made by certain celebrated manufacturer. ऐसा मार्क लगा दिया, कोका कोला उसमें जो है उसको लिख दिया, कोका कोला का है नहीं, तो by such counterfeit mark, the person was deceived in believing that he was from the celebrated manufacturer, which it was not, thus dishonestly induces to buy and pay for the article. A has caused cheating. A by exhibiting a false sample of article intentionally deceives Z into believing that article corresponds with the sample and then dishonestly induces Z to buy and pay for it. चावल था, बासमती सुंघा दिया, और जब देना था तो आपको वो जो है टूटा वाला जो चावल है वो पकड़ा दिया। A by tendering in payment for an article a bill on a house which A keeps no money and which A expects that the bill will be dishonored, पैसा है नहीं अकाउंट में, पता है कि डिसऑनर हो जाएगा चेक, डिसीव कर दिया and induces him to deliver the article intending not to pay for it. A cheats. A by pledging a diamond articles which he knows are not diamonds. प्लेज कर दिए, घर में जो है शीशा काट के उसमें बता दिए डायमंड है, एंड देन आप जो है फंस गए, आपने पैसा दे दिया, आपको लगा डायमंड है, बाद में निकला तो डायमंड ही नहीं है, भाग गया लेके, चीटिंग लग गई। A intentionally deceives Z into belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo which he does not intend to deliver and thereby dishonestly induced to advance money for the faith of such delivery. A cheats. But if A at the time of obtaining the money intends to deliver the indigo plant and afterward breaks his contract, does not deliver, he does not cheat. कॉन्ट्रैक्ट करते ही वक्त ही पहले था, पैसा मिल जाए और भाग जाए लेके,
कोई डिलीवरी नहीं करेंगे किसी भी गुड की, तो चीटिंग हो गई। लेकिन बाद में अगर मान लो शुरुआत में इंटेंशन नहीं था, डिसऑनेस्ट, बाद में हो गया, तब वो जो है चीटिंग नहीं होता है, बिकॉज इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन A intentionally deceives Z into belief that A has performed a part of contact made with Z which he has not performed and thereby dishonestly induce Z to pay money. A cheats. So that's it for section 415 deals with general, the offense of cheating. 416 deals with cheating by personation. Cheating by personation. A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, or knowingly substituting one person for the other, or representing that he or the other person is not such other person that he really is. डिफरेंस है सिविल सर्विस और यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर, सो ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर सर्टेन रिच पर्सन, वहाँ पे 416 लग जाता है, 415 में कम पनिशमेंट होती है। इसको बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सनेशन। इसमें तीन चीजें हैं, प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, knowingly substituting one person for the other, or representing that he or any other person is other than the person he is actually he is. So मोहल्ले में कोई रिच बैंकर है, आपका नाम मिलता जुलता था, आपने उसको यूज करके डिसीव कर दिया लोगों को। So here you have committed cheating by personation. आपने ये दिखा दिया हम धीरू भाई अंबानी हैं, और आपने ऐसा करके चीटिंग कर लिया लोगों को, ठीक है। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, पर्सन मर गया, आपने उसको वो कर दिया, किसी और के नाम टिकट है, खुद ही लेकर ट्रैवल करने लगे, चीटिंग बाय पर्सनेशन। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, whoever cheats shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year. और चीटिंग बाय पर्सनेशन की पनिशमेंट क्या है? whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 3 years. ओके, मिसचीफ देख लो सेक्शन 425। इसमें क्या है? इंटेंशन और नॉलेज है। विद द इंटेंशन और नॉलेज, इंटेंशन और नॉलेज क्या? दैट योर एक्ट इज लाइकली टू कॉज व्हाट? wrongful लॉस और डैमेज। सो अगर इंटेंशन और नॉलेज है आपको कि आपका एक्ट कोई रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कॉज करेगा, किसको? या पब्लिक को या किसी पर्सन को, तो वो केसेस जनरली आपको खुद कुछ नहीं मिल रहा है, रॉन्गफुल गेन इज नॉट हैपनिंग टू यू, नथिंग इज, यू आर गेनिंग नथिंग, ओनली यू वांट टू वेंट आउट सम वेंडेटा, यू वांट टू कॉज लॉस टू सम अदर पर्सन। गए, देखा होगा आपने, लोगों की अक्सर हरकत होती है सब, अगलों के शीशे फोड़ देना, गाड़ी है उसमें स्क्रैच मारते हुए निकल जाएंगे चाबी से, तो इस टाइप के लोग हैं। विद द इंटेंट और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और एनी पर्सन, विद दिस इंटेंट और विद दिस नॉलेज of causing loss or damage to any person or any public, a person thereby causes the destruction of any property, destruction कर दिया, या any such change in any property or in situation thereof, या ऐसा कोई भी चेंज कर दिया जो उसके वैल्यू को डिस्ट्रॉय या डिमिनिश करे और उसको इंजूरियसली या फिर अफेक्ट करे, then he commits mischief. So intention or knowledge to cause wrongful loss or damage to any public or person causes either the destruction of the property or causes change in the situation. And this change in the situation or the property will result in what? Diminishing the value or destruction of the value or utility of that property. Or it may affect it injuriously. Then the offense of mischief has been committed. Intention and knowledge is there, destruction or damage or change in situation is there, and then the change diminishes. If the change is there, then it diminishes the value. Okay, then the offense of mischief is basically committed.
एग्जाम्पल्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इट्स नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉय। जरूरी नहीं कि ओनर जो पोजेसर है, जनरली पब्लिक है, उसके भी रिस्पेक्ट में मिसचीफ किया जा सकता है। मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और द पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली एज वेल। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे वैल्यूबल सिक्योरिटी है, उसको जला दिया कि अगले को लॉस हो जाए। किसी का घर था बर्फ में, उसमें पानी डाल दिया, खराब हो जाए घर। किसी की रिंग थी, खुद तो नहीं लिया, उसको फेंक दिया नाली में। कोई प्रॉपर्टी थी, वो अटैच थी प्रॉपर्टी, बैंक उस प्रॉपर्टी को ले ना पाए, उसको रिकवर करके अपना जो है डेट सेटिस्फाई ना कर पाए, प्रॉपर्टी ही जला दी। कोई शिप थी, उसका इंश्योरेंस हो रखा था, जस्ट बिकॉज चाहा कि इंश्योरर्स जो है उनको नुकसान हो जाए, पूरा शिप ही डुबवा दिया। आपका और आपके दोस्त ने एक मिलके एक जानवर खरीदा, एक घोड़ा खरीदा, अगले से आपकी लड़ाई हो गई, आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए घोड़े को ही गोली मार दिया। आपका खेत है, उसमें अपने जो है कैटल को एंटर कर दिया, पूरा खेत खा जाए आपका। सो ये सारे इंटेंशंस, ये सारे जो है कंडक्ट जो है कवर होता है मिसचीफ में। वॉलंटरली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस, ये आप देखोगे, यही सब एग्जांपल मैंने आपको बताया है। Voluntarily burns a valuable security, introduces water into the ice house, voluntarily throws river into the ring belonging to Z. A, knowing that that his effects are about to be taken into execution in order to satisfy a debt due from him due to Z, destroys those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of that. यही सारी चीजें हैं। पनिशमेंट फॉर मिसचीफ क्या है? 3 month जनरली होता है फाइन, और बोथ 50 रुपए के ऊपर है तो 2 साल तक हो जाता है। मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल और एनी वैल्यू ऑफ द एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज, मिसचीफ बाय इंजरी, ये सब सेक्शन है। अब इसमें तो याद करना है, कैसे आप याद करोगे? एक प्रोग्रेशन बना के याद करोगे। 425 तो याद ही रहेगा, 426 भी याद ही रहेगा, 50 रुपीज किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द 10 रुपीज, ऐसे करके आप जो है निमोनिक्स वगैरह बना के आप इसको याद करो। मिसचीफ और किलिंग मेमिंग एनिमल फॉर 50 और वैल्यू ऑफ 50 रुपीज, यहाँ 10 रुपीज है, यहाँ 50 रुपीज है किलिंग और मेमिंग एनिमल वाला। देन मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन by wrongfully diverting the water, mischief by injury to public road, bridge, river or channel, mischief by causing inundation or obstruction of the public drainage 432, mischief by destroying or moving or rendering less useful a lighthouse or sea mark 433, lighthouse sea mark के लिए 433, mischief by destroying or moving a land mark fixed by public authority। ये important 435, mischief by fire or explosive substance 435 में है, पूछा जाता है। with intent to cause damage to amount of 100 or in case of agricultural produce 10 rupees, whoever commits mischief by fire of an explosive substance with intending to cause that thereby cause damage to any property to the amount of 100 rupees or upwards, where the property is agricultural 10 rupees or upwards। so mischief by fire or explosive substance 435 में कवर है। फायर और एक्सप्लोजिव का ही फर्दर है, with intent to destroy house 436, mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel, ये सारी चीजें हैं। ये हो गया मिसचीफ का। द फाइनल सेक्शन फॉर टुडेज डिस्कशन इज ट्रेसपास। पहले तो क्रिमिनल ट्रेसपास देख लेंगे। 441 इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, 446 तक तो इंपॉर्टेंट है ही, 456
बाद में 447 टू 456 आपका जो है बीच में पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना जो प्रॉपर्टी किसी और के पोजीशन में हो, दो इंटेंशन के साथ, आइदर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस और इंटेंशन टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय द पर्सन हु इज इन पोजीशन। So entering into or upon the property in possession of another person with intent to commit an offense or with the intention to intimidate, insult or annoy the person in possession of the property. So either you have entered, or it may happen that you have lawfully entered, but unlawfully you have remained in that property for fulfilling such intention also. Then also it will be a criminal trespass. Having lawfully entered, unlawfully remains there with the intent to intimidate, insult, annoy any such person with the intent to or with the intent to commit an offense. Then that person is said to commit criminal trespass. Layman terms में जो प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में है उसमें घुसना with an intention to commit an offense or with the intention to insult, intimidate or annoy that person. इट्स अ क्रिमिनल ट्रेसपास। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर वो कोई हाउस है दैट इज यूज्ड फॉर एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल है दैट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, और एनी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ कस्टडी फॉर प्रॉपर्टी, देन जनरली उसको बोला गया ये चीजें हाउस हैं। इसलिए क्रिमिनल ट्रेसपास अगर इस हाउसेज में हो गया तो ये हाउस ट्रेसपास कहा जाता है 442 में। Criminal trespass generally any property, but if the property is of the description that it's a building, it's a tent or it's a vessel which is used for human dwelling or any building which is used as a place of worship or for custody of property, then वहां पे criminal trespass house trespass हो जाता है। 441 है criminal trespass, 442 है हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास कब होता है? जब यही चीज आप जो है अपना एंट्री या जो है ये सब आप छुपा लो, कोवर्ट वे में आप जब आप ये करो, व्हेन यू हैव टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील योर पाथ, इन प्रिकॉशंस टू कंसील व्हाट, व्हेन यू हैव टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील योर सच हाउस ट्रेसपास, then it will become a lurking house trespass under section 443. Whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from the person from whom? From the person who has right to exclude you, the person who has right to eject you from such building, tent or vessel, then it is lurking house trespass. छुपा के हाउस ट्रेसपास जब छुप छुप के करेंगे तो लर्किंग हो जाएगा 443। 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास जब रात में कमिट होता है। फिर बाद में हाउस ब्रेकिंग है। हाउस ब्रेकिंग मतलब 445 में डिफाइंड है। हाउस ब्रेकिंग मतलब जब हाउस ट्रेसपास इन एनी ऑफ द 6 ways which have been mentioned under section 445. If house breaking if house trespass is committed in any of the 6 ways, meaning thereby person has committed house trespass and he affects his entrance, or if he has committed any offense and he exits that place in any of the 6 ways which are mentioned in section 445, then he commits house breaking. जैसे पैसेज था उस हाउस में घुसने का, खुद से ही वो पैसेज बना लिया, मेड पैसेज बाय हिमसेल्फ। पैसेज दैट वाज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, उस पैसेज को यूज कर लिया, गटर से चले आए। पैसेज वाज ओपनड बाय हिमसेल्फ। If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the has opened in order to committing of the house trespass by any means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened. So passage के respect में है, passage not intended by any person. If he enters or quits any passage not intended by any person other than himself or as an abettor of the offense, opening any passage opened by himself
he opened any lock by which he gained the access, affected his entrance by using criminal force, criminal assault, or by threatening any person with such assault, or if he has entered or quit any passage which was fastened by unfastening that passage. So with respect to the passage, with respect to the opening of the lock, with respect to criminal force and assault, that a person may enter, or the person, when he has committed the offense, he may exit any premises which is subject of house trespass. And if it falls under any of the 6 categories, then the house trespass will be termed as house breaking. A commits house trespass by making a hole through the wall out of Z's house and putting his hand through the aperture. Then it is house breaking. A commits house trespass by creeping into a ship at porthole between the decks. A commits house trespass by entering Z's house through window. So यही ये सब कवर होंगे. Enters through passage made by himself, hole खुद ही बनाया. Enters or quits through any passage not intended by any person other than himself. Enters or quits through any passage which the abettor of house trespass has opened in order to committing of the house trespass, by any means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened. So entering through window, commits house trespass by entering through the door, having opened the door which was fastened. This is house breaking. Opening the passage which was fastened. A commits house trespass by entering through the door, having lifted a latch by putting a wire through the hole in the door. This is house breaking. A finds the key, opening the lock. A finds the key of Z's house door which Z had lost, having opened the door with that key. This is also house breaking. Z standing on his doorway uses criminal force and assault. Here you will see. 5th one. Similarly, Z, the doorkeeper of Y, standing in Y's doorway, A commits house trespass by entering the house, having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. This is also house breaking. Okay. So these are the illustrations, important illustrations with respect to house breaking. 445 में. House breaking by night 446 में है. Okay. देन आपके पनिशमेंट है. 447 में क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट है. 448 में आपका हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट है. 453 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है में आपका लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट दोनों में सेम मिलता है. लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों सेम लेवल पे आते हैं. देन आपका लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये आपका हो गया 456. लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. सो ये है इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट. 441 आपका हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास. 442 हो गया आपका हाउस ट्रेसपास. जस्ट अ सेकेंड. 441 criminal trespass. 442 house trespass. 443 आपका हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास. 444 आपका हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट. 445 आपका क्या हो गया हाउस ब्रेकिंग. 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. ठीक, ये हो गया जनरल ऑफेंसेस क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड. क्रिमिनल ट्रेसपास 441. क्रिमिनल ट्रेसपास के बाद उसको अगर बिल्डिंग टेंट वेसल में है और इफ एनी प्रॉपर्टी इज यूज फॉर रिलीजियस पर्पस और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग टेंट वेसल यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, रिलीजियस पर्पस, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें हो गया अगर क्रिमिनल ट्रेसपास तो हाउस ट्रेसपास हो जाता है 442. हाउस ट्रेसपास का अगर डिजाइन जो है वो कंसील कर दिया जाए तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाता है. लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट में कमिट कर दिया जाए तो 444 लग जाता है.
अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास जब बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग आप देखोगे सेम लेवल पे आता है, तो जब आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट आपने बताया तो हाउस ब्रेकिंग नेक्स्ट आएगा। जब हाउस ट्रेसपास कमिट हुआ हो, ऑफेंडर जो है एंट्री या एग्जिट एनी ऑफ द 6 वे में करे, पैसेज खोल दे, पैसेज तोड़ दे, दीवार में छेद करके घुस जाए, ऐसा कोई यूज करे जो नॉर्मल आदमी ना यूज करे, लॉक खोल दे, लॉक तोड़ दे, दरवाजा तोड़ के घुस जाए, खिड़की से घुस जाए, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट के थ्रू एंट्री करे, तो ये हो जाता है हाउस ब्रेकिंग 445 एंड 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इन सारे की ऑफेंस जो है आपको 447 में आप देखोगे, 447 में पनिशमेंट है क्रिमिनल ट्रेसपास की, फिर 448 में आपकी पनिशमेंट है हाउस ट्रेसपास की, फिर 453 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों की पनिशमेंट है सेम, एंड 456 ये आपका सामने है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की पनिशमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी एग्रेवेटेड फॉर्म आपको देखने ही होंगे। ठीक है, so that's all for chapter 17 offenses against property. We'll continue thereon. Okay, thanks.